Hello viewers, Namaste. Welcome to back my YouTube channel Little Teacher Palak. आपको पता ही है कोरोना काल में हेल्थ का ध्यान देना बहुत इम्पोर्टेंट है. In today's episode, we are going to how to monitor the pulse oximeter during COVID-19. Now, while monitoring pulse and saturation, you require a device like this, which is called a pulse oximeter. Now, this is the pulse oximeter, and this is the starter button, and this is the screen. Okay. So once you put it on, you will get some numbers like this. So use your longest fingers, that is this middle finger. Okay. So once you put on, they will be on red color. Okay. So आप जैसे यहाँ पे इसमें हैंड डालोगे, अपनी फिंगर डालोगे, तो यहाँ रेड लाइट शो होगी. वो होता है हमारा सेंसर. ओके. द फिंगर पल्प शुड रेस्ट ऑन इट. ओके. Then just put the clip on and read the reading that will flash once your pulse oximeter. Okay. Now it takes some time for the pulse oximeter to sense the reading. So wait at least 15 seconds or 30 seconds and look just lines coming up and down. Okay. This is waves. Okay. So यहाँ पे wave show हो रही है. ये अप एंड डाउन होती रहती है. 15 to 30 सेकेंड में आपको पता चल जाएगा अप एंड डाउन होएगी. सो इससे आपका ये आपको दिख रही है, ये अप एंड डाउन होएगा. सो ये हमारा SPO2 है जो मेरा आ रहा है 99 एंड ये मेरी हार्ट रेट है जो मेरी आ रही है 105. ओके. And you can see the number 19, 98 and 99 is the saturation and the other one was the heart rate. Okay. Remember, the finger should not be wet. There should not be much of moisture. You should also clean this pulse oximeter regular. Okay. Some process baby के साथ भी होगा, बट आपको डॉक्टर से कंसल्ट जरूरी करना है बिकॉज उनका लेवल थोड़ा हाई होता है. मार्केट में बहुत सारे ब्रांड के ऑक्सीमीटर अवेलेबल हैं. आप कोई भी अच्छे ब्रांड का यूज कर सकते हैं. ओके. ध्यान रखें हेल्थ में कॉम्प्रोमाइज ना करें. एंड I hope you like my video, so don't forget to like and subscribe, and thank you for watching my video.